Hello students. In the last video we have started or we have begin the lesson. The name of the lesson is known as areas related to circle. Regarding to the areas related to circle, in the introduction I told you some formulas and how to use those formulas, and after that we have seen different formulas regarding to the area of sector, area of segment. Then after that I have shown you one example how to use those formulae. Now today I am with a new example that is regarding to the area of segment. In the last example we have discussed how to find out the area of sector. Now this example you see, then you will come to know that. Okay, figure and all other things are there which are required for this example, those are in front of you. Look this. Find the area of the segment AYB. Find the area of the segment AYB if radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB is equal to 120 degree and pi is equal to 22 upon 7. This figure is also given with this example. Only simply what is not given, that I will tell you only. Okay, this OM which I have drawn here, this OM is only not given. Everything is that remaining all other things are given in the figure with this example only. Okay, now what we are going to do, look this example, you will come to know that. Find the area of the segment AYB. Here we are going to find out the area of the segment AYB. Area of the segment which is shown in this figure with the help of shade, or this shaded region is known as segment AYB. You can say this shaded region is known as, this shaded region means those vertical and cross lines are there, horizontal lines. This is known as the segment AYB. We are going to find out the area of this segment AYB. When I told or when I have given the formulas regarding to the area of sector and area of segment, that time I have given one formula of area of segment that is not given in the textbook, and at the time of lecture also I told you one formula is there which is not given in the textbook, but that formula also we can use while finding the area of segment. I am going to show you both formulas, means our regular method. Regular method means what? Area of segment. How we can find out the area of minor segment? When we are finding the area of minor segment, that time what we are doing? Area of sector. Which sector is there? OAYB. This is the total sector. Okay, am I right? Area of sector OAYB minus area of triangle OAB. If you will observe, then you will come to know that. Means from this area of sector we have to subtract this triangle area, then we will get what will remain. This segment will remain, and that segment area we have to calculate. And for that purpose, what is formula? Area of sector AYB minus area of triangle OAB. Okay, this is our regular method, but without using this formula also we can find directly that by using that new formula that I have given at the time of video also, last video, and at the time of lecture also I told. Okay, I am going to show you both method. Which method you are feeling simple, that method you can use while solving. Okay, both are correct and absolutely correct, absolutely good methods. Okay, now I am going to start this example. Listen and try to understand. This figure is already given, that's why I will write here only solution given. This figure is already given in with example, only simply I did this construction OM already I have done here, but while explaining I will tell you where we have to use this. Okay, I will start. Look here, area of segment AYB. Here what is the question? Find area of segment. Now area of segment. Now area of segment, which segment? Look here, AYB. AYB is equal to, what is formula? You know that very well. Area of sector AYB minus area of triangle OAB. Area of sector AYB minus area of triangle OAB. Area of sector AYB minus area of triangle OAB. Got idea? Do you understand? Okay, area of sector AYB minus area of triangle OAB. Now look here. This 120 degree is given. This is nothing but central angle or angle of sector.
Do you understand? Okay, by using that we can find out. Now look here, we want to find out area of segment. For that purpose, first of all we have to calculate area of sector. Area of sector formula also you know that very well, and this also area of triangle formula. By using that, first of all we will find out area of sector and area of triangle, area of triangle, area of sector and area of triangle, and then we will subtract. Automatically we will get the area of segment AYB. Do you understand what I said? Okay, for that purpose what I will say, this is equation number 1. We can consider this is known as equation number 1. This is whole total. Now we will try to find out area of sector AYB. Okay, now look here. Now area of sector AYB is equal to, what is formula area of sector? Theta upon 360 into pi r square. Theta upon 360 into pi r square. Okay, area of sector OAYB ऐसे ही लिखता हूँ for our understanding. Theta upon 360. What is the value of theta? Theta is nothing but what? Central angle. Theta is given here 120 degree. 120 degree divided by 360 into pi r square. What is the value of pi? Look here, 22 upon 7. इधर लिखता हूँ देखो, 22 upon 7 into r square. Radius is also given. What is radius of the circle? Radius of the circle is 21 centimeter. Understood? Means what will happen? 21 square. Okay, next. Therefore area of sector is equal to, ये अभी सॉल्व करके दिखेंगे. 0 0 कैंसिल, 12 1 जार 12, 12 3 जार, ओके, 3 1 जार 3. इधर डिवाइड हो सकता है. देखो क्या मिलेगा इधर, 0 0 कैंसिल, 12 1 जार 12, 12 3 जार यानी कि 1/3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21. 3 1 जार 3, 3 7 जार 7 1 जार 7, 7 3 जार, अदरवाइज 7 1 जार 7 भी कर सकते हो. Therefore area of sector, after solving you will get answer. What you will get answer, that I will tell you. 462 centimeter square. Got it up to this step? Here we got area of sector. Now what is remain? Look here, area of triangle OAB. Area of triangle OAB. For that purpose only that OM is drawn. Now I will tell you what is the explanation. Now for finding the area of triangle OAB, look here carefully, you look in the figure. Now for finding the area of triangle OAB, draw OM perpendicular to AB. Here we have to draw this OM perpendicular to AB. Also M is midpoint of AB. How we have to draw? OM perpendicular to AB, not only OM perpendicular to AB but also M is the midpoint of AB. That I will write here for your better understanding. Now draw, for finding area of triangle ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए मैंने बोला था, तुम लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो. Now draw OM perpendicular AB. M is a midpoint of AB. M is a midpoint of AB. Okay, M is midpoint of AB. Got idea up to this step? Therefore now look in the figure. Here OA is equal to OB. M is midpoint, means AM is equal to MB, and OM is the common side, means side, side and side. SSS. By using SSS congruency test or congruency criterion, we can prove that triangle OMA, otherwise ऐसे ही बोल सकते हैं हम, AMO and BMO both are equal to each other or congruent to each other. Otherwise ऐसे भी कह सकते हैं हम,
OM is the common side, and OA is equal to OB because radii of the circle. Then one side and hypotenuse are equal to each other, means RHS criterion of congruence. RHS criterion of congruence, we can say, what we can say, both triangles are congruent to each other. Do you understand? तो RHS भी यूज कर सकते हैं इधर, SSS भी यूज कर सकते हैं, कौन सा तुम्हें अच्छा लगे यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम. Therefore, or otherwise we can say, then in triangle BMO and triangle AMO, in triangle BMO and AMO, otherwise AMO and BMO ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा. ओके देखो इधर AMO and BMO ऐसा भी करोगे तो भी चलेगा. ओके कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए इधर लिखता हूँ AMO and BMO. ओके ये फिर से स्टेटमेंट लिखता हूँ, देखो. देन इन ट्रायंगल AMO and triangle BMO, then in triangle AMO and triangle BMO, what I said, OA is equal to OB because radii of same circle. Look here, OA is equal to OB, radii of same circle. OM is the common side, and because of that AMO is congruent to BMO, RHS congruence or RHS criterion of congruence. Now what, OA is equal to OB. What is reason? Radii of same circle. Radii of same circle. Got idea? OA is equal to OB, radii of same circle. Next, OM is equal to OM. What is reason? Common side. Okay, and this is the hypotenuse and this is the one side. Therefore, we can say triangle AMO is congruent to the triangle BMO. What is reason? RHS criterion of congruence. RHS criterion of congruence. Do you understand what I said? RHS criterion of congruence. अभी दोनों ट्रायंगल हमने इक्वल दिखा दिए. So M is the midpoint. Okay. Then समझ में up to this step. Then ये किस लिए चल रहा है तुम्हें पता चला होगा. We want to find out area of triangle OAB. For that purpose we are doing this. तो ये इतना क्यों करना चाहिए, क्योंकि इधर बेस इंटू हाइट चलेगा, तो बेस भी हमें मालूम नहीं है और हाइट भी हमें मालूम नहीं है. ध्यान से देखो मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे. फिर से एग्जांपल तुम्हें दिखा देता हूँ. देखो एग्जांपल समझ में आने बहुत इंपॉर्टेंट है. एरिया ऑफ सेगमेंट AYB. फॉर दैट पर्पज वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सेक्टर OAB. एरिया ऑफ सेक्टर वी गॉट हियर इजीली. Okay, what we got here? 462. But for finding what area of triangle OAB, see here, area of triangle OAB, here base is what? AB, and height is not there. For that purpose we have drawn here height. What we have drawn? OM perpendicular to AB, that we drawn. That is our construction. Again one important thing, we don't know what is the length of OM, we don't know what is the length of AB. Then how can we find out base into height? Do you understand? Then if we don't know base and height, then we are unable to find out the area of triangle. For that purpose we are showing here, after drawing this OM perpendicular to AB, where OM we can say median, otherwise we can say M is the midpoint of AB. Because of that this AB is divided in two parts. AM is equal to MB. OM is the common side and OA and OB are the radii. By using this point also you can show those two triangle which one AMO and BMO are equal to each other or congruent to each other. ऐसा भी दिखा सकते हो. Otherwise now I have used here what I used, RHS criterion of congruence. That also you can use, and by using that we will find out now what is the length of AB and what is the length of OM. समझ में आ रहा है? इसके लिए हम ये पूरा
स्टेप्स जो पूरा अभी जो एक्सप्लेनेशन चल रहा है ये अभी हम कर रहे हैं. आर यू रेडी? नाउ लुक हियर. AMO is congruent to BMO because what is reason? RHS criterion of congruence. Next, you see over here, M is the midpoint of AB. Do you understand? Here M is the midpoint of AB. Because of this M, this OM is a median, and if it is median, then this triangle, this angle, which one AOB is divided in two equal parts. Which one? AOM and BOM. Means now total angle is 120 degree. Then those two angles AOM and BOM will be what? 60 degree. How can we find it? Look here. So I will show you. Then M is midpoint of AB. M is what? Midpoint of AB. Okay. Therefore, angle AOM is equal to angle BOM is equal to half into 120 degree. Therefore, angle AOM is equal to angle BOM is equal to what? 60 degree. Understood everyone? What I did here? Got idea? Okay. Now, look in this figure. We want to find out OM and AB, means height and base. For that purpose, what we will do? We will consider this OM is equal to X. And by using this OM, we can find out AB. How we can find? Look here. What we will do? Let us consider OM is equal to X centimeter. OM is equal to what? X centimeter. Okay. So, from triangle OMA, so from triangle OMA, look in this figure. From triangle OMA, OM divided by OA, OM divided by OA. Okay. Now look here. So from triangle OMA, which angle we have to consider, that is also very important. Okay. ये भी इधर मैं लिख देता हूँ. Consider angle. Which angle we have to consider? AOM. AOM. ओके. ये एंगल हमने कंसिडर कर दिया. AOM. समझे? Do you understand which angle we have considered? AOM. ध्यान से देखो, मैं इधर ही मैंने अभी एक थोड़ा टाइम इधर भी मैंने होल्ड किया है. क्यों? AOM ये आधा एंगल है. इधर देखो, AOM is equal to what? 60 degree. अभी which we have considered? So from triangle OMA, consider angle AOM, that is equal to what? 60 degree. Now here, by using this triangle and angle, we will write cos ratio. Cos ratio, what will be cos ratio? OM upon OA. OM upon OA. Do you understand? How OM upon OA? Adjacent side divided by समझ में आ रहा है? OM upon OA. Adjacent side divided by hypotenuse, that is equal to what? Cos 60 degree. OM upon OA is equal to what? Cos 60 degree. Understood? Therefore, OM, what we have considered? OM X. OA, इधर देखो, OA is the radius. Radius is already given 21. Right? We will write here 21 is equal to cos of 60 degree. What is the value of cos of 60 degree? Cos of 60 degree is equal to what? 1 by 2. Therefore, X is equal to cross multiplication 21 divided by 2. What do we got here? X is equal to 21 divided by 2 centimeter. Okay.
अदरवाइज वी कैन राइट OM इज इक्वल टू एक्स यानी कि क्या, इधर देखो OM इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर. Okay, now next look in this same figure and same triangle. In this triangle only AM divided by OA, AM divided by OA, we have to consider which angle only, AOM. AM means opposite side divided by hypotenuse. Opposite side divided by hypotenuse means what? Sine. Sine, what is the angle? 60 degree. Okay, we can write here also AM divided by OA is equal to cos sine of 60 degree. AM, what is the value of AM? We don't know, we want to find out as it is. That is equal to OA. OA we know that 21. समझ में आ रहा है? OA यानी हमें मालूम है हाइपोटेन्यूस. साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 डिवाइडेड बाय 2. नाउ डू योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. AM is equal to what you will get? Cross multiply 21 into √3 divided by 2. 21 into √3 divided by 2 centimeter we can say. Got it up to this step? 21 √3 divided by 2. We got here AM. अब इधर ध्यान से देखो फिगर में. We got AM means we can find easily MB because M is the midpoint. जितना AM होगा उतना ही MB होगा. तो हमें अभी टोटल AB मिल सकता है. AB मिल गया, OM भी मिल गया ऑलरेडी. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट AB. देन AB is equal to 2 times AM. AB is equal to what? Double of AM. That is equal to 2 into AM की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है? 21 √3 divided by 2. Here 2 will get cancel. Then what will get? AB is equal to 21 √3 centimeter. We got here AB is equal to 21 √3 centimeter. Now we can find easily area of triangle. Which one? OAB. Okay, और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB फाइंड आउट करके हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ व्हाट विल गेट? एरिया ऑफ सेगमेंट. गॉट आइडिया? नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ. देखो इधर. नेक्स्ट, देयरफॉर now what we are going to find out? Then area of triangle OAB is equal to what is formula? Half into what is base? AB into what is height? OM. Understood? AB into OM. Am I right? AB into OM. Now put values. शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ. देखो, एरिया ऑफ OAB इज इक्वल टू हाफ इंटू AB की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की हमने? 21 √3 इंटू OM व्हाट वी गॉट? 21 डिवाइडेड बाय 2. अंडरस्टूड? तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे. देखो, 21 डिवाइडेड बाय 2. एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. अब ये न्यूमरेटर को इंटू न्यूमरेटर. 21 इंटू 21 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2. एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू कितना हो गया? 21 इंटू 21 441 √3 डिवाइडेड बाय 4. 441 √3 डिवाइडेड बाय 4. ओके, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we get what we will get? Area of segment, area of segment AYB is equal to area of sector. Correct? Area of sector. Once again I will write that formula. Area of sector
ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, which triangle? OAB. Okay, now we will subtract it. Area of segment is equal to, segment नाम भी लिखता हूँ इधर, AYB. Area of segment AYB is equal to area of sector. What is area of sector we got here? Already we got 462, हमको मिला है ऑलरेडी वो, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल we got here 441 root 3 divided by 4. 441 root 3 divided by 4. We will solve this now. What you will get? See, area of segment AYB is equal to, now we will solve this, 462 minus 441 root 3 divided by 4. 441 root 3 divided by 4. Now we will do here cross multiplication. Area of segment AYB is equal to, cross multiply, 4 into 462. Okay, 4 into 462 divided by nothing means 1 into, like that only. Do you understand what you will get? Like that you will get 462 into 4 minus 441 root 3 divided by 4. Understood? Cross multiplication. Area of segment AYB is equal to, now look here, 462 के हम फैक्टर्स निकालते हैं इधर, क्या करेंगे हम, 462 के फैक्टर्स निकालेंगे और 441 के भी फैक्टर्स निकालेंगे. 461 के फैक्टर आते हैं 21 into 22 into this 4 already as it is, minus 441 के फैक्टर्स 21 into 21 into root 3 as it is, divided by 4 also as it is. Now what is common factor? See here, 21 is the common factor, take it out. Area of segment AYB is equal to, 21 is the common factor outside. Do you understand? Okay, 21 is the common factor outside. Again what will be the outside? Look here, see figure carefully. Okay, and remaining terms what we will do, we will write inside. What will remain inside? Look here, 22 into 4 88 minus 21 root 3, correct, 21 root 3, और ये 4 डिवाइडेड बाय बाहर लिखते हैं हम, चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई है, समझे. 21 इन ब्रैकेट 88 माइनस 21 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4. ओके, तो डायरेक्टली हमें अभी एरिया मिल सकता है, ऐसे लिख सकते हैं हम. देखो इधर लिख के दिखा देता हूँ. एरिया ऑफ सेगमेंट AYB is equal to 21 divided by 4 in bracket 88 minus 21 root 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट AYB. ये हमारी रेगुलर मेथड है. ओके, अभी मैंने जो फॉर्मूला तुमको दिया था, बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला ऑल्सो आई विल शो यू. ओके, कौन सा तुम्हें अच्छा लगेगा वो देखो. इधर मैं लिखता हूँ अल्टरनेटिव मेथड. अल्टरनेटिव यानी कि इसको ऑप्शन मेथड. ओके, सॉल्यूशन गिवन. व्हाट इज गिवन? r is equal to 21 centimeter, theta is equal to 120 degree. r is equal to 21 centimeter and theta is equal to 120 degree. ओके, फॉर्मूला ऐसा था, देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा है, AYB इज इक्वल टू, और जो फॉर्मूला मैंने दिया था वो फॉर्मूला तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन मैंने वो दिया था तुमको. वो फॉर्मूला ऐसा है, देखो मैं इधर लिखता हूँ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2
इंटू, ध्यान से देखो फॉर्मूला, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू डॉट, यानी कि इंटू है इधर भी एक डॉट देता हूँ तो इंटू समझ में आएगा तुम्हें, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट कंप्लीट आउटसाइड द ब्रैकेट आर स्क्वायर. This formula I have given. Okay, now we will put these values. What we will get? See, area of segment AYB is equal to, अभी वैल्यू पुट करो, थीटा 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई 22/7 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 है तो 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस, इधर लिखता हूँ देखो, थीटा डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 2 आउटसाइड द ब्रैकेट आर स्क्वायर यानी कि 21 स्क्वायर. अभी सॉल्व करेंगे. एरिया ऑफ सेगमेंट AYB इज इक्वल टू, देखो इधर अभी सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 12 1 जार 12, 12 3 जार. ओके, तो आंसर क्या आता है देखो, इधर मैं दिखा देता हूँ तुम्हें क्या आता है, 22 डिवाइडेड बाय 21, 0 0 कैंसिल, 12 1 जार 12, 12 3 जार, 3 इंटू 7 21 माइनस साइन 120 डिवाइड बाय 2 यानी कि कितने 60 डिग्री, समझे, इंटू कॉस 120 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कॉस 60 डिग्री, 21 स्क्वायर. 21 का स्क्वायर कितना आता है 441. समझ में आ रहा है? ओके, तो उसको 21 स्क्वायर एज इट इज़ हम वैसे के वैसे आउटसाइड द ब्रैकेट रखेंगे. इसके आगे लिखना है, इधर जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा है. एरिया ऑफ सेगमेंट AYB इज इक्वल टू, अभी क्या करेंगे, इस 21 स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. उसके पहले क्या करेंगे हम, साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यूज लिखेंगे पहले. 22 डिवाइडेड बाय 21 माइनस साइन 60. ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 60, 1/2. व्हाट इज वैल्यू ऑफ व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 60, √3 डिवाइडेड बाय 2. हमने अभी भी लिखा है इधर. ओके, इसके पहले जो हमने फाइंड आउट किया था उधर लिखा था. ओके, समझ में आ रहा है, साइन 60 लिखा था हमने √3 डिवाइड बाय 2 और कॉस 60 लिखा था हमने 1/2. अभी लिखता हूँ देखो इधर फिर से, इंटू 1/2 आउटसाइड द ब्रैकेट क्या आएगा 21 स्क्वायर. अभी इस 21 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर. इज इक्वल टू लिखता हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट तुम ध्यान में रखो, मल्टीप्लाई करो, 22 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 21 स्क्वायर माइनस, इधर देखो √3 इंटू 1 यानी कि √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू कितना होगा 21 स्क्वायर. समझा? इज इक्वल टू, अभी देखो, ओके, ध्यान से देखो अभी क्या चल रहा है इधर, 22 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 21 स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21 माइनस माइनस, समझ में आ रहा है? ओके, इधर डिवीजन नहीं हो सकता तो 21 का स्क्वायर कितना आता है 441. ओके, इंटू √3. इधर देखो 21 का स्क्वायर 441 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट कंप्लीट. अभी इधर देखो 21 21 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 21 इंटू, इधर देखो ये 21 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 22 इंटू 21. आंसर क्या आता है 22 इंटू 21. समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? 22 इंटू 21. ओके, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही ऐसे रखेंगे 22 इंटू 21 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाय 4. ओके, अभी इसको क्रॉस करना है, जैसे मैंने अगले स्टेप में हमने किया था वैसे ही इसको क्या करना है, हमें
क्रॉस करना है इसको, इस इधर इधर देखो हमने किया है, अभी अभी मैंने जो सॉल्व करके दिखाया था इधर, इधर देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था ना इधर, इधर देखो 462 को मल्टीप्लाई किया था। अगर तुम इधर भी देखोगे 21 इंटू 22 इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 462। अब अभी इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आता है देखो, मैं इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें। एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इज इक्वल टू, ओके, अभी क्या आएगा देखो 22 इंटू 21 इंटू 4 माइनस, ध्यान से देखो, माइनस 21 इंटू 21 इंटू √3 होल डिवाइडेड बाय व्हाट 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करो, ओके, मल्टीप्लिकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं, जैसे हमने आउटसाइड निकाला था, इधर क्या कॉमन है देखो 21 आउटसाइड आ गया, ओके, नहीं तो मैं क्लियरली लिखता हूँ, देखो ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ कॉमन ईयर 21 इज़ द कॉमन फैक्टर, ओके, डिवाइडेड बाय ये 4 आउटसाइड लिखेंगे, बचेगा अंदर क्या 22 इंटू, ध्यान से देखो, ओके, 22 इंटू 4, 22 इंटू 4 कितना आता है 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, वही आंसर आ गया। क्या किया है देखो इधर 21 आउटसाइड, ये डिवाइड बाय 4 आउटसाइड, ओके, क्योंकि ये 21 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो बचा क्या 22 इंटू 4 88 माइनस 21√3, आंसर सेम, ओके। कौन सी मेथड तुम्हें अच्छी लगे तुम फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। Remaining examples will continue in the next video. Thank you.